Please sit in any comfortable meditative posture with your hands on your knees in Jnana or Chin Mudra, head, neck, shoulders, arms, and back in a straight line, eyes and mouth gently closed. Become aware of the whole body from the top of your head to your toes. Awareness of your head, neck, shoulders, arms, chest, upper back, abdomen, lower back, hips, legs, the whole body. Shift your awareness to your breath. Normal spontaneous breathing coupled with awareness. I am breathing in and I am breathing out. And I am aware I am breathing in. I am aware I am breathing out. Let this be the form of your awareness for some time. Bring your awareness to your Bhrumadhya. Visualize here the form of either your Guru or your Ishtadevata or a brightly burning candle flame. Maintaining your awareness on this, we shall chant the mantra Om 3 times together, followed by the Shanti mantras. Inhale deeply. Together. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Hari Om Tat Sat. Keeping your eyes closed, become aware of the purpose and objective of our gathering: to strengthen the mind, to boost the bodily systems, and to connect deeper with the aim and purpose of our very existence. And towards this effect, let us begin with the chanting of the 3 mantras given to us by Pujya Gurudev Swami Satyananda Ji. Today being Friday, we shall be following it up with the chanting of the Lalita Sahasranamam, after which we will move into the Navratri Aradhana. To begin, bring the image of Mrityunjay Mahadev, that form of Shiva, who is the conqueror of disease, decay, darkness, and death. Install him at your Bhrumadhya. Offer pranam to him and take the sankalpa of health, harmony, happiness. With this sankalpa, we shall chant the Mahamrityunjay mantra 11 times. I shall chant the first mantra. You will join in for the next 10 in the same rhythm, speed, and intonation. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyamamritat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyamamritat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyamamritat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanan Mrityormukshiyamamritat. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, let us invoke Surya Narayana, the symbol of energy, vitality, and prana, the very essence of life. Install him at your Bhrumadhya. Offer pranam to him and take the sankalpa of increased creativity, improved capabilities, higher wisdom, and a better discrimination. With this sankalpa, we shall chant the Gayatri mantra 11 times. I shall chant the first mantra. You will join in for the next 10 in the same rhythm, speed, and intonation. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hari Om Tat Sat. Next, let us invoke Ma Durga. She is Durgati Nashini. She is Kala Vinashini. She is Uma. She is Rama. She is Brahmani. She is Shakti manifest. Invite her and install her in your heart center. Offer pranam to her and take the sankalpa of removal of difficulties, distresses, hardships, and despairs, and to replace them with hope, enthusiasm, energy, focus, dedication, hard work, perseverance, and contentment. With this sankalpa, we shall chant the Durga Dvatrinchan Namamala 3 times altogether. ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना
दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ओम Om. Keeping your eyes closed, experience the manifestation of the sankalpas we have taken. Hari Om Tat Sat. Today being Friday, we shall be chanting the 1,000 names of Ma Lalitambika, the Shri Lalita Sahasra Nama Stotram. For a few moments, bring the image of Ma Lalitambika, Para Bhattarika, Mahasamradni, Shrimad Tripura Sundari, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti Swarupini. Offer pranam to her, and in complete humility, let us get ready to chant the Shri Lalita Sahasranama Stotram. अथ श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् ओम अस्य श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वशिन्यादि वाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्री ललिता परमेश्वरी देवता
श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजं मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकं श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफल अवाप्त्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलेश्वरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद् हेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। हम पृथिव्यात्मिकायै गन्धं कल्पयामि, हम आकाशात्मिकायै पुष्पैः कल्पयामि, यं वायुव्यात्मिकायै धूपं कल्पयामि, ब्रह्माग्न्यात्मिकायै दीपं कल्पयामि, वाम अमृतात्मिकायै अमृतमयमहानैवेद्यं कल्पयामि, सर्वात्मिकायै सर्वोपचारपूजां संकल्पयामि। नमः। श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्रम्। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कजा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षिद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूर मज्जत्कामेश मानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूर कमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकल्लोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनि नाभ्यालवालरोमाली लता फलकुचद्वयि लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्य पट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भ वस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्त स्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठ जयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधीति सञ्चन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा शिञ्जानमणिमञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दकमना महालावण्यशेवधिः सर्व
सर्वारुणा नवद्यांगी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रज सेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्नि प्राकार मध्यगा भण्ड सैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रम हर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रम नन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विशङ्ग वधतोषिता विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा कंठाधक्कटि पर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी शक्तिकूटैक तापन्न कट्यधो भागधारिणी मूल मंत्रात्मिका मूल कूटत्रय कलेबरा कुलामृतैकरसिका कुल संकेत पालिनी कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुल योगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रारांबुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचि षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी बिसतंतुतनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना शातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरंतरा निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हंत्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोध शमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी चतुष्षष्टुपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चंद्रविद्या चंद्रमंडल मध्यगा चारु रूपा चारुहासा चारु चंद्र कलाधरा
चराचर जगन्नाथा चक्रराज निकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी ध्यान ध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपंती तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपात आब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विदायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुति सीमंत सिंदूरी कृत पादाब्ज धूलिका सकलागम संदोह शुक्ति संपुट मौक्तिका पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादि निधना हरिब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता ह्रींकारी ह्रीमती रुद्या हेयोपादेय वर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीव लोचना रंजनी रमणी रस्या रणत्किंकिणी मेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमण लंपटा काम्या कामकलारूपा कदम्ब कुसुम प्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणा रस सागरा कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेद वेद्या विंध्याचल निवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता विजया विमला वंद्या वंदारुजन वत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमंडल वासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाश विमोचिनी संहृता शेष पाषंडा सदाचार प्रवर्तिका तापत्रयाग्नि संतप्त समाह्लादन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पद लक्ष्यार्था चिदेक रसरूपिणी स्वात्मानंदलवीभूत ब्रह्माद्यानंद संततिः परा प्रत्यक्षिती रूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणाडि कृतज्ञा काम पूजिता शृंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थिता ओड्याण पीठ निलया बिंदु मंडल वासिनी रहो याग क्रमाराध्या रहस्तर्पण तर्पिता सद्य प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षी वर्जिता षडंग देवता युक्ता षड्गुण्य परिपूरिता नित्य क्लिन्ना निरुपमा निर्वाण सुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकंठार्ध शरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्या स्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लाद कौमुदी भक्तहार्द तमो भेद भानुमद्भानु संततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवंकरी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्ट पूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जड़ शक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः संध्या द्विजवृंद निषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पंचकोशान्तरस्थिता निस्सीम महिमा नित्य यौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेय कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा गुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौल मार्ग तत्पर सेविता कुमार गणनाथांबा तुष्टि पुष्टिर्मति धृतिः शांति स्वस्तिमती कांतिर्नंदिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी सुभ्रूः शोभना सुरनायिका कालकंठिक कांतिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वांगाति प्रहरणा वदनैक समन्विता पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोक भयंकरी
अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्ज निलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वला क्षमालादिधरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघ वृता स्निग्धौदन प्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपुराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बु जगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रानैक रसिका हाकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढ़ा सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदन प्रीत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यलभ्या पुण्यश्रवण कीर्तना पुलोमजार्चिता बंध मोचनी बर्बरालका विमर्श रूपिणी विद्या वेदादि जगत प्रसूः सर्वव्याधि प्रशमनी सर्वमृत्यु निवारिणी अग्रगण्या चिन्त्य रूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्ष निषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्ण रूपिणी महाकैलास निलया मृणाल मृददोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा फालस्तेन्द्रधनुप्रभा हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका दाक्षायणी दैत्यहंत्री दक्ष यज्ञ विनाशिनी दरांदोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिः गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्त तिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विनोदिनी सचामर रमावाणी सव्यदक्षिण सेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहा क्लींकारी केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्ति स्त्रितशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्य गंधाढ़्या सिंदूर तिलकांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भा स्वर्ण गर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यान गम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रहा सर्व वेदांत संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपा मुद्रार्चिता लीला क्लुप्त ब्रह्मांड मंडला अदृश्यादृश्य रहिता विज्ञात्री वेद्य वर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगा नंदा युगंधरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूप धारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोक यात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैत वर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी बृहति ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा बलि प्रिया भाषा रूपा बृहत्सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राज्य लक्ष्मी कोशनाथा चतुरंग बलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसंधा सागर मेखला दीक्षिता दैत्य शमनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्य रूपिणी सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमंडल रूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया
स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधेष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्भोली मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदा त्रिसुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तण्ड भैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराजदूः त्रिपुरेशी जयन्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणमणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधि काव्य कला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परम ज्योति परम धाम परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमंत्र विभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्पीठरूपिणी विशृंखला विविक्तस्था वीरमाता व्यत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुद्धुष्टा शान्त्यतीत कलात्मिका गंभीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कांता कांतार्ध विग्रह कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरंगिता कनत कनकताटंका लीला विग्रह धारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधा श्रुति संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्र प्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमरकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्यो निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्य मार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता चैतन्यार्घ्य समाराध्य चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेर मुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमुति श्रुति संस्कृत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशि विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेत मंचाधीशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बंधुक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी ज्ञान मुद्रा ज्ञान गम्या ज्ञान ज्ञेय स्वरूपिणी योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी अभ्यासातिशय ज्ञाता षडध्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानध्वांत दीपिका आबाल गोप विदिता सर्वानुल्लंघ शासना
श्री चक्रराज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी श्री शिवा शिव शक्यैक्य रूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः श्री शिवा शिव शक्यैक्य रूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः श्री शिवा शिव शक्यैक्य रूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम कथनम संपूर्णम्। Keeping your eyes closed for a few moments. Feel the presence of Ma. And it is this transcendental, primordial form of Ma that we are now going to worship with our Navratri Aradhana, the Trigunatmika form of Devi. As we begin the Rajasic part of our journey, let us, during these 3 nights, become aware of the Rajas within us, and let us work towards improving the quality of this Rajas. Sattva, Rajas, Tamas, all 3 are essential, but as long as they are in proper proportion and with good quality. So let that be our thought, our bhav, as we move ahead with our Navratri Aradhana. We shall begin with the chanting of the Sri Saundarya Lahari, composed by none other than Bhagavad Pad Bhagwan Bhashyakar Sri Adi Shankara himself, dedicated to the Cosmic Mother, the Saundarya Lahari. Today we shall chant from verse 45 to 55. The Samput mantra in the beginning and at the end will be verse 25. We shall begin with the Bija mantras and conclude with the Prarthana Namaste Namaste. Those of you who are able to should please come in Vajrasan. Bring your hands in Avahaniya Mudra, palms facing ourselves, fingers in the form of invocation, supplication. The thumb should be at the base of the ring finger. Avahaniya Mudra. Meditate on the form of Ma, invoking her grace. Om Aim, Om Hrim, Om Shrim, Om Krim. Trayanam Devanam Triguna-janitanam api Shive Bhavet Puja Puja
तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समुकुटा अरालय स्वाभाव्यात् अलिकुलः सश्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचि किञ्चल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ती स्मरमथन चक्षुर्मधुलिह ललाटं लावण्य द्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मुकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासादुभयकृतसन्धानमयित सुधालेपस्फूर्तिः परिणमतिराकाहिमकर भ्रुवौ भुग्ने कञ्चेत् भुवनभयभङ्गव्यसनिनी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणे धनुर्मन्ये सव्येत् अरकरगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहसुते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया प्रिया मा वामं ते सृजति रजनीनायकममुम् तृतीया दृष्टिस्ते दरदलितहेमाम्बुजरुचि समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीम् विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयै कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरण योग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तबकमकरन्दैकभरितं कटाक्षव्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव रसास्वादतरलौ असूया संसर्गात् अलिकनयनं किञ्चिदरुणम् शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितरमुखे कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशनयने विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते मयि जयति दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्माणि दधति पुराम्भेतुश्चित्त प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्रा धरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्ट स्मरशरविलासं कलयत विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितनीलाम्बुजतया विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदयिते पुनः सष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजः सत्त्वं बिभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव अपवित्रीकर्तुं न पशुपतिपराधीन हृदये
दयामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः न दशोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघे तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकिता निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषा शफरिका इयं च श्रीर्बद्धच्छदपुटकवाटं कुवलयम् जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन्मुकुलितकरोत्तं समुकुटा नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य Keeping your eyes closed, feel the presence of Ma. Feel the presence of Bhagwan Bhashyakar, Bhagavad Pad, Acharya Shankara. Pranam to them, take their blessings. And then we move ahead to the chanting of the Shri Siddha Kunjika Stotram. शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापशुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वायोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निःशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते
चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वां विं वुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जन्भनाधिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं शं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यदा यथा ॐ इति श्रीमद् रुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। Now we move ahead with the chanting of the Saptashloki Durga. 7 verses of the Sri Durga Saptashati chosen to represent the entire Saptashati. शिव उवाच देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेन आप्यं वास्तुति प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुपाद्यनि छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। Now the Durga Saptashloki. ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं ॐ दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा। We have worshipped Ma.
in the transcendental Trigunatita form, as well as the manifest Trigunatmaka form. Experience Ma present. We are in front of her like small children, babies. Let go of the intellect. Let go of the shrewdness, cunningness, strategy. Open yourself out completely to her. This is the moment of communion with Ma. We are observing her, doing avalokan. We are near her, samipan, gazing at her form, her rupa, with the prayer that let us dissolve into her form, sayujjam. And as we are in her vicinity, the heart blooms with joy and happiness. Just like the baby, when it gazes upon its mother, bursts into joy and happiness. In the same way, experience happiness. And in this happiness, let us sing the name of Ma and worship her with the Tantroktam Devi Suktam. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभ्रतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै दिव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थितां जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की जय। अटल छत्र की जय, साके दरबार की जय। जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Keep your eyes closed for a few moments and maintaining
our awareness towards Ma. Let us open up our hearts to her. As we have moved out from the mood avastha, there are lots of desires, thoughts, hopes, ambitions, fantasies, aspirations coming in our hearts. Let us request the grace and blessings of Ma to give us the wisdom to choose the correct path towards connecting and deepening our connect to her. Not every desire is meant to be fulfilled, and not every desire is meant to be pushed away. The golden mean has to be achieved. How to do it, what to choose, what not to choose. Let us request for the Vivek, ability to discern. Let us pray for Shakti, the ability to implement. Let us pray for Bhakti, ability to consecrate ourselves. Let us pray for Vidya, ability to merge ourselves in that knowledge. And maintaining this prayer, let us conclude with Shanti Path. Inhale deeply. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Hands in pranam mudra. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव. Harihi Om. Hari Om. Tatsat. Gently rub your palms against each other. Place them on the closed eyes and move the palms away. Open your eyes. Namo Narayan. Namo Narayan Swamiji. Namo Narayan ji. And I don't think
we would have been Namo Narayana Swamiji. able to have a better start for the Rajasic aspect than this, to be able to chant the Shri Lalita Sahasranamam. Because now we are moving from mood avastha, where everything is held in, blocked, and confused, to slightly opening the eyes and observing, oh, there are so many things. And then the desires come. Let me have this and that and this. All that is coming up and is going to come up. Now, by her blessings, we can channelize it, direct it towards a cause of self improvement. The means can be anything. Saints all over have shown the medium of worship can be through anybody. It is said that Saint Kabir used to get lost in the name of the Lord, and the Lord used to come because Kabir was a weaver. So he was weaving, handloom was moving on, but he was lost in the Lord. What will happen to the handloom? The Lord used to come. It is said, I think it is Sant Bahina Bai. He was not able to write, but music in devotion of the Lord came spontaneously to her. So who can write for her? The Lord himself used to come and write. And what was she doing? She was just a servant, the house of the great Saint Namdev. She was not sitting and closing her eyes the whole day. Oh, please don't disturb me, I'm in my sadhana. No, she was not doing that. She was washing the clothes, cleaning the bartan, cleaning the house, all these things. That is what a servant does. And she was doing it day in and day out. And we know how beautifully we treat our servants. We garland them with lots of insults and taunts. She would also have got her share of that. She was not shaken by that. Her heart was with the Lord. Hands are doing their job with perfection. Heart is dedicated to the Lord, and the Lord comes in different forms. You do not have to look for Lord within or up in the skies. Lord is out there in front of you. Every action that we do is dedicated to Him. That is the form when the desires are coming up, and all of us have desires. Whoever says they don't have desires is deluding themselves. These desires have to be channelized and given a form and consecrated to the Lord. I am feeding the child, but I am feeding the Lord through the child. Just as I am offering puja to the murti, but I am not offering puja to that stone. Through the stone, I am invoking the Lord. Same way, through this Murta Swarupa, we are invoking the Lord, because remember, there is divinity in each and every one of us. So we are worshipping that. Let each of our action become a consecration to Him. I am a mother. I take care of my family. That is my consecration to Him. I am a businessman. I do the business and consecrate everything as if I'm doing it for Him. Whatever we do, that is dedicated to Him. That is how we have to approach the Rajasic component of our life. And therefore, on the first day of the Rajasic triad, let us try and become aware of the different thoughts, hopes, aspirations, desires, kamana,
which come in our heart, and we have to ponder how we can consecrate them to the Lord. What is my duty? I have commitments taken up. I can't give them up, but I can use whichever commitment we are doing as dedication to the Lord. God can come in that form. God doesn't need any specific form. God is beyond form, and God is in every form. All we have to do is we have to connect to Him. So let that be our thought. Let that be the methodology which we need to follow. And in the Rajasic component, this is what we have to try and do. So that is the assignment for today. Till tomorrow, Hari Om Tat Sat, Namo Narayan, Jai Guru. नमो नारायण स्वामी जी नमो नारायण स्वामी जी नमो नारायण स्वामी। Namo नमो Narayan. नारायण स्वामी।